Good afternoon, sir. Is whiteboard visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let me take your attendance first. Are you following whatever was taught earlier? Are you following whatever was taught earlier? Is it audible, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Audible, sir. Are Yes, you sir. following what was taught earlier? Yes, sir. Now you must be knowing tomorrow there is a quiz test for PH1007. Yes, sir. At the evening, sir. Sir, is there is in change on time, sir? Because other section are Yeah, there telling. is going to be. Actually, it was scheduled earlier in KIT module at 7 p.m. But now perhaps it will be conducted at 8 p.m. But in KIT module. So you check your login ID and password in KIT module. That time, the exact timing I will let you know soon. In the group only I will post it. And you tell everybody to attend the class, attend the exam. Satyavrat, Yes, sir. you tell everybody, otherwise they will be in problem, huh? Yes, sir. So at 8 now? Huh? So 8 आता? Could not hear. So 8 बजे ना? 8, नहीं नहीं, exact timing I will write. Okay, sir. Okay. Yes, sir. Samriti, Present, sir. let me share. Satya Sarangi, Yes, sir. Satyavat Sahu, Present, sir. Saurabh, Saurabh, Present, sir. Present, sir. Ayak Mandal, Present, sir. Sayam, Present, sir. Mic please. Shivam, Present, sir. Shubham, Present, sir. Simran, Present, sir. Bhagya, Present, sir. Pranshu, Present, sir. Sudipta, Present, sir. Priya, Present, sir. Ratnadeep, Present, sir. Utkarsh, Present, sir. Vaishnavi, Present, sir. Vinita, Vinita Ranjan, Ajay, Yes, sir. Amish, Amish देखिए Singh. मैं चैट बॉक्स Yes, Amish. सर वो रिटर्न चैट बॉक्स में लिख दिया सर Ankit Sinha, Present, sir. Ankit Senapati, प्रेजेंट सर Anurag Das, Present, sir. Anushka Shruti, Present, sir. Anvay Ghosh, प्रेजेंट सर Anvay Ghosh, प्रेजेंट सर Arpit, Present, sir. Aryan, यस सर Ashish, Present, sir. Asutosh, प्रेजेंट सर Ayushi, Present, sir. Ayushi, है, Vibhu Kalyani, Present, sir. Chaman, Present, sir. Nitish, प्रेजेंट सर Chetna, Present, sir. Avi, Abhi, Harsh, प्रेजेंट सर Hitesh, Present, sir. Ritik, Ritik Manthi, Kartika, Present, sir. Kaustuv, प्रेजेंट सर Kunal, प्रेजेंट सर Neil Jain, प्रेजेंट सर Ravi Kumari, Present, sir. Pratyush, Present, sir. Premchandra, Premchandra Bharti, प्रेजेंट सर Priyam, Present, sir. VS, प्रेजेंट सर Tanajoy, प्रेजेंट सर Raviraj, प्रेजेंट सर Rishabh, प्रेजेंट सर Rishabh Prasad, Present, sir. Ritika, Present, sir. Samudranil, Samudranil, Subhrajit, प्रेजेंट सर Satvik,
Present, sir. Satyam, Present, sir. Tommy, Present, sir. Raini, Present, sir. Prasant, Present, sir. Sasi, Present, sir. Shubham, Present, sir. Siddhant, Present, sir. Soham, Present, sir. Somendu, Torin, Present, sir. Shubham Das, Sir, he left the university. Subra, Present, sir. Suprasad, Present, sir. Pratim, Present, sir. Kavita, Present, sir. Susri, Present, sir. Vyas, Present, sir. Harish, Present, sir. Uttal, Present, sir. Divesh, Present, sir. Ritankar, Present, sir. Anchal, Present, sir. Anchal, Aman, Present, sir. Dipanjan, Present, sir. Abhijit, Adarsh, Present, sir. Akash, Present, sir. Anand, Anand Gupta, Ananya Chaudhary, Present, sir. Ananya Singh, Present, sir. Ankit Saran, Present, sir. Anika Singh, Present, sir. Annav, Present, sir. Arya, Present, sir. Aryaman, Present, sir. Akar, Present, sir. Aryan, Present, sir. Ashish, Present, sir. Vaishnavi 2, Present, sir. Bhavya, Present, sir. अनंत गुप्ता, शुभम दास तो नहीं है, समुद्र नील, ऋतिक महांती, Present, sir. विनीता रंजन। ऋतिक महांती तू मजाक कर रहा है क्या? No, sir. Sorry, sir. अभी विनीता रंजन, Present, sir. विनीता, ये क्या हो रहा है? ये सब मजाक छोड़ो, टाइम बर्बाद हो रहा है। नेक्स्ट टाइम सेकेंड टाइम कॉल नहीं करेंगे। आज लैब में कौन सा एक्सपेरिमेंट है रे आप लोगों का? सर बार पेंडुलम। बार पेंडुलम है। बार पेंडुलम में तो वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है और उसमें एक्चुअली शुरू से ही हम दिखा देंगे। बार पेंडुलम में थोड़ा ग्राफ वगैरह है और ग्राफ को अच्छे से प्लॉट करना पड़ेगा। ओके सर यस सर आज मेरा बायो का री एंड एग्जाम है 3 से 6, 3 से 5:30। हाँ वो लिख के दे दे, उसमें ट्यूटर मेंटर को सीसी में रखेगा और उस मेल को तू एक स्क्रीनशॉट करके रखेगा, बाद में काम आएगा। उसी टाइम में वो स्क्रीनशॉट रखने का मतलब है कि तू जो मेल दिया है वो कौन सा डेट में दिया है, वो बताने से हम उसको चेक करके देखेंगे क्या हेल्प आपको कर सकता है। ठीक है, ओके सर। तो ये सब चीज तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फेज वेलोसिटी भी हम लोग कल कैलकुलेट करके देखे थे कि फेज वेलोसिटी ऑफ ए वेव is not becoming equal to the velocity of the particle in case of de Broglie waves, मतलब matter waves. So velocity paradox occurred. तो अभी इसमें 3 challenges रह गया। What we discussed was phase velocity of the matter waves and check whether the phase velocity of matter waves is equal to the particle velocity or not. ठीक है, मैं इसको शेयरिंग बंद कर देता हूँ। अब व्हाइट बोर्ड को देखो तो 2-3 लाइन में अगर वो प्रॉब्लम को आपके सामने रखे जो पढ़े थे वो ऐसा है। De Broglie in 1923 argued that basing upon the principle of symmetry, De Broglie argued that if radiations, electromagnetic waves which are really in wave manifestation can also behave like particles, in some experiments they can manifest their particle characteristics,
then why not the particles like electron, proton, etc.? They can manifest themselves as waves. If it is, then if an electron which is assumed to be a particle every time and we were able to measure its mass, momentum, velocity, etc., if we are going to represent the same electron by a wave in a particular phenomena, what will be its wavelength? So de Broglie gave a formula. He told if you know the momentum of the electron, then you can easily determine the wavelength. Lambda equal to h by p. Now that time, the idea was that you can measure the values of the physical quantities with unlimited accuracy. नेचर ने आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए मना नहीं किया है। तो ये जो फॉर्मूला आपके सामने रखा गया डी ब्रोगली के द्वारा, लैम्बडा इक्वल टू h by p, किसी का एंड से माइक अनम्यूट है, चेक कर लो। मैं नाम नहीं बोल रहा हूं, तुम चेक कर लो। ओके, so de Broglie formula gave you lambda equal to h by p. Now that time it was known to everybody that the values of the quantities can be measured with unlimited accuracy. That means lambda is exact. Any wave whose lambda is exact is a monochromatic wave. The monochromatic wave moves with a velocity called as the phase velocity. So if the electron as a particle moves with a velocity and we call that as particle velocity, the same electron when is manifesting itself as a wave, it will have a velocity phase velocity. We obtain the velocity phase velocity of an electron like matter, and we found that the de Broglie waves representing the electron has a phase velocity given by omega by k, which is equal to E by P. Then we calculated this phase velocity both in relativistic and non-relativistic limit. Found that phase velocity is not equal to particle velocity both in relativistic as well as non-relativistic limit. So that became a problem, because one entity in its wave manifestation and in its particle manifestation cannot have two different velocities at the same time. So one entity in wave manifestation and particle manifestation cannot have two different velocities at the same time. This is what we call as velocity paradox. So this is one problem. Second problem is that if the electron is represented by a monochromatic wave, as I have told you, a monochromatic wave has a large extension. You cannot have a monochromatic wave who has a finite extension, localized to a small region of space. A wave, if it is localized to a small region of space, it cannot be a monochromatic wave. A monochromatic wave always extends over a large region of space. So if you assume electron is representing itself as a monochromatic wave, it must have a big extension over the space. That means what? That means where the electron is located, that you cannot exactly say, it becomes delocalized. At one place of that wave, at one end of that wave, someone sitting will demand that I am detecting the wave, and at another end of the same wave, someone else will be saying that I am also detecting the same electron. That means the same electron will be detected simultaneously at many places. So this makes electron delocalized. So to remove this delocalization and the velocity paradox, people initially started rejecting the idea of matter waves for electrons. They told that electrons can never be representing themselves by waves. But
That time, within 2-3 years, in 2 separate experiments at 2 different places of Earth, people verified experimentally that yes, electrons can also manifest themselves as waves, as well as they also checked the validity of the de Broglie relation. So both the things were there. People were asking that because of the velocity paradox and because of delocalization problem, electron must not represent by a wave. But simultaneously, in experiments, you are verifying that electron beam can show diffraction effect, and de Broglie relation is validated there. Seeing is believing. So what you see in experiment, you cannot deny that. Then people started thinking of, might be we have done some mistake in understanding the electron waves. आप लोग इलेक्ट्रॉन का जो मैटर वेव असम्पशन है डी ब्रोगली के द्वारा, उसको रिजेक्ट क्यों करने चाहते हो? Because electron as a monochromatic wave spreads over a region of space, big region of space, so it becomes delocalized. As well as electron as a wave moves with a velocity different from that it's as a particle, velocity paradox. So क्या किया जा सकता है कि ये दोनों प्रॉब्लम रिमूव हो जाए और इलेक्ट्रॉन को वेव के रूप में भी असम्पशन करना मतलब एक्सेप्टेड हो जाए? इसके लिए उस टाइम का जो फिजिसिस्ट थे वो थोड़ा फिर वेव फेनोमेना को और अच्छे से देखे. देखो कितना इंटरेस्टिंग बात आया यहाँ पे. कुछ लोगों को उस टाइम में एक इंटरेस्टिंग बात दिखाई दिया. सोचो ये सी का बेड है, इसके ऊपर बहुत हाइट तक वाटर है, फ्यू किलोमीटर हाइट तक हो सकता है भी, या फ्यू 100 मीटर्स तक. जब सी बेड में अर्थक्वेक किसी जगह पे होता है, अर्थक्वेक, तो क्या होता है? When earthquake occurs, large number of seismic waves of different wavelengths, different frequencies are generated. जिस जगह पे earthquake हुआ ना, at that place large number of seismic waves of different wavelength and different frequency they get generated, and all these seismic waves they superpose because at the same region they got generated. So the water at that place comes under the influence of many waves simultaneously of different wavelengths and different frequencies. And then you know what happens. The water profile there becomes like this. जो वाटर पैरेलल होके कितना बढ़िया था, वो वाटर एक जगह पे दब जाएगा और एक जगह पे बहुत ही ऊपर उठ जाएगा. ये जो वाटर इस रीजन का ये इधर चला जाएगा और वाटर का प्रोफाइल इस तरह हो जाएगा. तो इन दिस केस व्हाट हैपेंड? इन दिस केस you got a wave effect in this region. वो रीजन लोकलाइज्ड है, वो वेव इफेक्ट इस तरफ से बहुत डिस्टेंस तक और इस तरफ से बहुत डिस्टेंस तक नहीं है. ये कई फ्यू 100 मीटर या फ्यू मीटर डिस्टेंस के अंदर ही ये वेव्स सिमट गए. हाउ दैट कुड पॉसिबल? ऑल दीज वेव्स superpose constructively in this region. You know, whenever waves superpose, the resultant amplitude there becomes very high, constructively. And when they superpose destructively, they try to cancel each other effects. So what happens, you know, in the region where all these seismic waves superpose, there they superpose constructively, giving you a very high effect in amplitude, whereas beyond that region, they destructively superpose, and there the amplitude of the wave is 0. And this seismic
resultant wave produced in water due to superposition of all these different wavelength and frequency waves, that as a whole becomes a packet of waves, many times called as wave packet or group of waves, and proceeds forward with a velocity that is called as group velocity. This group velocity is the velocity of the whole group. That means all the waves, they are superposed. That velocity is not equal to velocity of individual waves, monochromatic waves, no. And with this group velocity, this whole wave packet with this high altitude water height, they proceed forward towards the shore. शोर की तरफ आगे बढ़ते हैं और शोर में सुनामी लाते हैं, बीच में सुनामी लाते हैं. ये होता है सुनामी में जो वेव्स प्रोड्यूस होता है अर्थक्वेक की वजह से. अच्छा, क्या ये एक ही जगह पे दिखता है? नो. जब आपका कोई भी लाइट सोर्स से लाइट निकलती है, the lights emitted are not of single wavelengths. There are so many different wavelengths and frequencies present. एक वेवलेंथ से और एक वेवलेंथ तक, इस रेंज के अंदर जितना सारे वेवलेंथ्स आप सोच सकते हो, the emitted waves, ये अंदर इस सभी वेवलेंथ का वेव आपको मिलेगा और ये सब सुपरपोज करेंगे. ये सुपरपोजिशन कैसा है? How it is? They superpose constructively in a specified region and destructively outside. तो आउटसाइड रीजन में कोई वेव इफेक्ट नहीं दिखेगा, तो ये टोटल लाइट वेव का अलग अलग वेवलेंथ वाला, अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाला वेव का एक पैकेट बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा और वो ग्रुप जाएगा आगे विथ ए वेलोसिटी कॉल्ड एज ग्रुप वेलोसिटी. सो जो सोर्सेस आप घर में देख रहे हो, जिसको आप सोच रहे हो कि ये हाईली मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, प्रैक्टिकली वो भी मोनोक्रोमेटिक नहीं होता है, उसमें भी कई सारे वेवलेंथ होते हैं एक नैरो रेंज का. इवन लेजर सोर्स इज नॉट आल्सो 100% मोनोक्रोमेटिक, दो इट इज ए गुड सोर्स ऑफ गुड मोनोक्रोमेटिक सोर्स, नॉट 100%. सिमिलरली व्हेन वी स्पीक, जब मैं बात करता हूं तो मेरे मुंह से ना काफी सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का साउंड वेव निकलता है और वो सब सुपरपोज करके मेरे सामने एक वेव पैकेट बनाते हैं. सुपरपोजिशन एक लोकलाइज रीजन के अंदर, एक छोटा सा रीजन के अंदर कंस्ट्रक्टिव होता है, आउटसाइड डिस्ट्रक्टिव होता है. तो बाहर का रीजन में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा. तो साउंड का एक वेव का पैकेट, एक ग्रुप जिसमें कई सारे डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी वाले वेव है, वो आगे बढ़ते हैं एक पैकेट बन के. जब हम गिटार का स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ डिस्टर्बेंस, उसमें कई सारे डिफरेंट वेवलेंथ का वेव सेटअप होते हैं और सभी सुपरपोज करके एक वेव पैकेट बनता है और वही वेव पैकेट आगे बढ़ता है एक वेलोसिटी में, जो कि इंडिविजुअल वेवलेंथ का वेव वेलोसिटी से, फेज वेलोसिटी से अलग है. आप समझे? ये जो 3-4 एग्जाम्पल हम दिए, वेव पैकेट क्या है, वो बनता कैसा है और वो आगे बढ़ता कैसा है. सिंगल मोनोक्रोमेटिक वेव जिस वेलोसिटी में जाता है उसको बोला जाता है फेज वेलोसिटी. बट अगर कई सारे डिफरेंट वेवलेंथ वाला वेव, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाला वेव सुपरपोज एक रीजन में ऐसे करेंगे कि उस रीजन में वो सब कंस्ट्रक्टिवली सुपरपोज करेंगे और बाहर की रीजन में वो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोज करेंगे, तो फिर उस वेव का एक पैकेट जिसका एक बाउंड्री होता है, एक लोकलाइज्ड पैकेट बन जाता है और वो पैकेट एक वेलोसिटी में जाता है. जो वेलोसिटी वो पैकेट जिस वेवलेंथ वाला वेव को लेके बना है, उनका इंडिविजुअल वेलोसिटी का फेज वेलोसिटी से अलग होता है. दैट इज व्हाट वी कॉल एज ग्रुप वेलोसिटी और द वेलोसिटी ऑफ द वेव पैकेट. Did you got this concept of wave packet, how it is formed? Normally, whenever you see in nature propagation of waves, 99.99% waves all are, you can say, wave packets practically. They are not consisting of single wavelengths. Would you understand what I told? Yes, sir. Yes, sir. Then yes. Any question?
Then, when it was found that assuming electron to be a monochromatic wave of single wavelength resulted two problems. क्या क्या प्रॉब्लम हुआ? डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाया, ये लोकल में डीलोकलाइजेशन हो गया, और इसका फेज वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी सेम नहीं हो रहा था. इसीलिए लोगों ने अश्यूम किए कि शायद इलेक्ट्रॉन एक मोनोक्रोमेटिक वेव नहीं है. जब इलेक्ट्रॉन अपना वेव मैनिफेस्टेशन दे रहा है, प्रैक्टिकली वो एक वेव पैकेट है, एक रीजन के अंदर स्प्रेडेड होने वाला एक वेव पैकेट है. तो फिर वो वेव पैकेट बना कैसे? It was assumed that the electron in its wave manifestation must be associated with many wavelengths belonging from a range. Many different frequency, different wavelength waves are there to represent the electron, which superpose to form a wave packet, a localized wave packet. It does not extend up to infinite. No. All these waves superpose outside destructively, and in a fixed localized region they superpose constructively. So practically, instead of assuming the electron to be a single monochromatic wave, you assume it to be a wave packet. This is what the suggestion was. And this wave packet moves with a velocity, as we know, group velocity, different from the velocity of individual waves, what we call as the phase velocity. ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी जरूर अलग होगा. अगर इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप के रूप में, पैकेट के रूप में आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल मैनिफेस्टेशन का वेलोसिटी, जो कि पार्टिकल वेलोसिटी बोला जाता है, और वेव मैनिफेस्टेशन का जो वेलोसिटी है, क्योंकि वो पैकेट है, पैकेट का वेलोसिटी या ग्रुप वेलोसिटी के साथ सेम होना चाहिए, फेज वेलोसिटी के साथ नहीं. क्योंकि फेज वेलोसिटी होता है एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक वेव का, जबकि ग्रुप वेलोसिटी होता है एक वेव पैकेट का, एक वेव ग्रुप का. जो कैसे बनता है? हाउ इट इज फॉर्म? इट इज फॉर्म ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ मेनी डिफरेंट वेव्स of different wavelengths and frequencies, superpose in such a way that they superpose constructively in a specified region and destructively outside. तो ये वेव पैकेट का फॉर्मेशन और ग्रुप का फॉर्मेशन, ग्रुप ऑफ वेव्स का फॉर्मेशन, डी ब्रोगली का आइडिया आने का 100-150 साल पहले ही लोगों को पता था. वाटर में वेव पैकेट जाता है, स्ट्रिंग में वेव पैकेट जाता है, लाइट में वेव पैकेट जाता है. इस मामले में 1900 से पहले लोगों को पता था. तो लोगों ने उस आइडिया को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए भी अप्लाई किया. दे थॉट इलेक्ट्रॉन एज ए वेव पैकेट. नहीं, तुम्हारा हम सुन रहे हैं. यस, क्या हुआ? 749? नहीं सर, कुछ नहीं सर. So what people argued that the electron in its wave manifestation must be represented by a wave packet instead of a single monochromatic wave. Here we will consider a simplest case. We will take only two waves of different wavelength and frequency. We will superpose them and try to understand how a wave packet is formed practically, and how that wave packet moves, what is the velocity of that wave packet, and how it is different from the velocity of the individual waves that the wave packet constitutes of. So let us investigate this formation of wave packet. ये एक लंबा, मतलब लंबा क्वेश्चन के रूप में काफी बार एग्जाम में आता है. अगर इस रिलेटेड किसी को कुछ क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, आई विल अप्रिशिएट. You have got your mid-sem program.
Yes. Yes. देखो, how a web packet is formed, formation of web packet दिख रहा है ना, जो लिख रहे हैं? We shall consider superposition of two waves only and see how a wave packet is formed. हम लोग दो वेव लेंगे और दोनों को सुपरपोज कराएंगे। एक का वेवलेंथ होगा लैम्डा या एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा ओमेगा और एंगुलर वेव नंबर होगा के, और दूसरे का फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा अलग है और एंगुलर वेव नंबर भी थोड़ा सा अलग है। लेकिन हमारा सुविधा के लिए, फॉर आवर actually simplicity, we will assume that amplitudes have to be same. Then the first wave is represented by a sin omega t minus kz, and second wave is represented by a sin omega plus delta omega into t minus a plus delta k into z. Is it clear? Is it understood? Yes, sir. Is it now after superposition, जब वो सुपरपोज करेंगे, the resultant wave principle of superposition क्या बोलता है? psi 1 plus, so a कॉमन आ जाएगा, sin omega t minus kz plus sin omega plus delta omega into t minus k plus delta k into z. Sin A plus sin B. Whenever you take sin A plus sin B, what you get practically? A 2 sin A plus B by 2. So omega plus delta omega by 2 into t minus k plus delta k by 2 into z into cos A minus B by 2. So what happens? Omega t minus omega t is 0. So this will be omega delta omega by 2 into t minus delta k by 2 into. If you superpose these two waves, you get a resultant wave like this. What you can summarize as 2a cos delta omega by 2 into t minus delta k by 2 into z whole into sin omega plus delta omega by 2 into t minus k plus delta k by 2 into z. Is it clear? Is it clear? ये बात समझ में आया? तो जो रिजल्टेंट वेव हुआ, वो रिजल्टेंट वेव का एक्सप्रेशन क्या हुआ? चलिए एक काम करते हैं, इसको हम लोग ए ले लेते हैं, तो फिर हो गया ए साइन ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा बाई 2 इंटू टी माइनस के प्लस डेल्टा के बाई 2 इंटू जे. What is A? A is equal to 2A cos. सर Yes. नीचे का बोर्ड नहीं दिख रहा सर. सर बोर्ड थोड़ा नीचे नहीं दिख रहा. बोर्ड नहीं दिख रहा है. कैमरा, यस सर, कैमरा थोड़ा टिल्ट कर दीजिए. अरे इतना देर हो गया, आप नहीं बोल रहे हो इस बात को. हम लोग सोचे सर पहले.
अभी टिका? Yes, sir. Perfect. Yes, sir. So when A is equal to 2A cos delta omega by 2 into T minus delta K by 2 into Z। देखो यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग आया, आपका दो वेव को आप सुपरपोज कराए, ओवरलैप कराए। ये था आपका जेड डायरेक्शन, जिस तरफ वेव जा रहे हैं। अभी रिजल्टेंट जो मिला सुपरपोजिशन के बाद, वो रिजल्टेंट एक वेव हुआ जिसका एम्पलीट्यूड ए है। और मार्क कर लो, ये एम्पलीट्यूड टी के ऊपर भी डिपेंड करता है, जेड के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब क्या? मतलब अगर दोनों ही वेव इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बोथ द वेव्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो दोनों का ओवरलैपिंग होने के बाद, सुपरपोजिशन होने के बाद, आपको किसी पॉइंट में किसी टाइम पे जो एम्पलीट्यूड मिलेगा, थोड़े देर के बाद, थोड़े टाइम के बाद उस जगह पे वो एम्पलीट्यूड नहीं मिलेगा। टी बढ़ जाएगा तो एम्पलीट्यूड बदल जाएगा, जेड भी बदल जाएगा तो भी एम्पलीट्यूड बदल जाएगा। So what will practically happen at the same point, the amplitude of oscillation will change with time। अगर आप किसी एक इंस्टेंट में टाइम को फिक्स कर दो और अलग अलग पोजीशन में एम्पलीट्यूड को प्लॉट करो, टी को फिक्स कर दिए कांस्टेंट, जेड को बदले, तो जेड बदलने से भी कॉस बदलेगा तो ए भी बदलेगा। किसी जगह पे जेड का ऐसा वैल्यू आएगा जहां पे ए सबसे ज्यादा होगा, कोई एक जगह होगा जहां पे जेड का वैल्यू ए का वैल्यू 0 होगा, और बीच में एम्पलीट्यूड का वैल्यू घट घट के फाइनली 0 हो जाएगा। सेम थिंग विल ऑकर हियर। Again, if you go to this side, here the amplitude goes on increasing, becomes maximum, then again decreasing, then at some point 0. So it appears the oscillation is going on like this. We call this portion as one packet. So what you observe, which मतलब whenever two waves superpose at a particular time, you will find along z axis at different positions the amplitudes are different, and there will be some points where the amplitude is maximum. They are called as antinodes. These points are called as antinodes. The points where the amplitude is 0, they are called as nodal points. So you will find some positions where there will be amplitude 0 and they are the nodal points. There will be some points where the amplitude is maximum, they are the antinodal points. But this is the picture at a particular t is constant. What happens when you see little latter? क्या होगा अगर थोड़ा देर के बाद देखा जाए t प्लस डेल्टा t में? t को अगर थोड़ा बदल दोगे तो z का जिस वैल्यू पे जो वैल्यू एम्पलीट्यूड का था, t को बदल देने से cos का वैल्यू बदल जाएगा, तो उसी पॉइंट पे अलग एम्पलीट्यूड मिलेगा। मतलब हर एक पॉइंट का एम्पलीट्यूड टाइम के साथ भी बदलना है और हर एक टाइम पे एम्पलीट्यूड अलग अलग जगह पे अलग अलग है। Two things are happening here. The amplitudes at different points at the same instant are different. The amplitudes at same instant, the amplitudes at one point at different times are different. One is time evolution, another is space evolution. तो जो एम्पलीट्यूड यहाँ पे था, सोचो जहां पे एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा था, जरूर t प्लस डेल्टा t में वो दूसरे जगह पे चला जाएगा। मतलब पहले क्या था, वो पहले ऐसा था,
लेकिन t प्लस dt में ये t टाइम, t प्लस dt के टाइम में वो ऐसा चला जाएगा। अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला पोजीशन जो कि एक जगह पे था, अभी वो पोजीशन थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, डेल्टा जेड। सो एक टाइम पे जो एम्पलीट्यूड एक जगह पे था, little after the same amplitude will be seen at a later place. That means this packet is progressing. This packet is progressing forward with a velocity called as the group velocity. And this group velocity will be equal to delta z by delta t. Because this is the velocity with which the packet proceeds forward. Do you understand this? Would you all understand this, or you still have some doubt on this? Please respond. Would you all understand this? Yes, sir. Now then, जो amplitude, what amplitude you get at z at t, you see the same amplitude at z plus dz at t plus dt. So amplitude at z at t is amplitude at z plus dz delta z. Yeah, you can take dz at t plus dt. Because the amplitude is progressing with the velocity same as the velocity of the packet. That is the packet velocity or group velocity. Now this will be possible provided these quantities, I mean cost term, are equal. That means what? That means delta omega by 2 into t minus delta k by 2 into z should be equal to delta omega by 2 into t plus dt minus delta k by 2 into z plus dz. Cancelling the same terms on both sides, what you get is delta omega 0 is equal to delta omega by 2 dt minus delta k by 2 dz. So this gives you delta omega into dt minus delta k, और इक्वल करके ये इसको ले जाओगे delta k into dz. But what is the group velocity? Delta dz by dt. So this is equal to delta omega by delta k. If you choose delta k tends to 0, this becomes dw by dt. You see, individual waves have their own phase velocity, but when they overlap, superpose, wave packets form, and that wave packet proceeds with a velocity which is called as d omega. अगर आपको phase velocity देखना है, the phase velocity is omega by k. अगर आपको group velocity of the wave packet देखना है, that is equal to d omega by dk. This is the difference. Here you have superposed only two waves. But if you superpose so many waves, दो नहीं बहुत सारे अलग-अलग wavelength वाला belonging to a range, अलग-अलग frequency वाला belonging to a range, you know what kind of wave packet you will get? Very interesting wave packet in that case you will get. You will find that it is possible, I mean, to superpose all the waves, slightly differing wavelength and slightly differing frequency in such a way that the resultant along z-axis will be something like this. So what you got? This is an when we take localized to a specific region with different amplitudes at different positions, and this is obtained due to superposition of so many different waves whose wavelengths belong from an interval, whose frequencies belong from an interval. This is what the interesting thing people found. I mean, the concept of wave packet goes like this.
that whenever a number of waves superpose, you get, but slightly differing frequency and wavelength, you get a wave packet that gets localized over a region of space. एक particular जगह के अंदर वो रहेगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन को wave packet के रूप में रिप्रेजेंट करने से that becomes localized. As well as now this wave packet will not move with the phase velocity. This will move with a groove velocity which is given by d omega by dk. What is d omega? D omega is that range of frequency from which all the component waves belong to. Dk is that range of wave number from which all component waves belong to. This is what is explained. I am sharing in this mathematics. This is very important. Go through this. I am showing you. See, what we have done here is we have discussed formation of wave packet by considering superposition of two waves only, and finally found that the resultant amplitude is different at different positions. You mark equation 21. In the expression for amplitude, there is time as well as there is z. Of course, here I have assumed that waves are moving along x-axis. Then, what you get is a picture kind of like this. Upper one represents one wave, lower one represents second wave, and the bottom one represents the wave packet that is formed due to superposition of these two waves. But here you have superposed only two waves, you know. If you superpose many waves, you will get kind of wave packet like this. Can you mark? This wave effect is localized. It is not that there you are superposing two waves only. So even if it was kind of many number of wave packets spread over a big region of space, but here no. Here the superposition is taking place in a constructive manner in a specified localized region, and outside they are taking place in a destructive manner. That's why you are getting a high amplitude in a specified region and very, very low amplitude outside. So the wave packet becomes of a small size and localized. And this wave packet moves with a velocity that we derive, which is equal to d omega by dk. This is the expression for groove velocity that we derive, equation number 22. So what we found is, जब बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले वेव सुपरपोज करते हैं, ऐसा कि एक कन्फाइंड रीजन में वो कंस्ट्रक्टिवली सुपरपोज करेंगे और बाहर डिस्ट्रक्टिवली, तो एक वेव पैकेट बनेगा, और वो वेव पैकेट एक वेलोसिटी में जाएगा जिसको हम लोग ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं, एंड द सेम ग्रुप वेलोसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल फेज वेलोसिटी. You can easily establish a relation between phase velocity and group velocity. That's very easy to do, and a small, only few steps. You see what is group velocity? D omega by dk. What is phase velocity? Omega by k. Now this gives you omega is equal to v phase into k. So take the derivative of both sides. Why? Because you need group velocity. Then this is equal to dv phase by dk into k plus v phase chain rule, a product rule. So this becomes v phase into d plus k dv phase by dk. If you want to express this in terms of wavelength, that is so easy. You know, k is equal to 2 pi by lambda. So dk by d lambda minus 2 pi by lambda square. Now dv phase by dk can be written as dv phase by d lambda
into d lambda by dk. Better you do one thing. Lambda is equal to 2 pi by k. So d lambda by dk. इसको ऐसे लिखो. Then this is dv phase by d lambda. What is d lambda by dk? Minus 2 pi by lambda k square. Now it is put, very easy to do all these things. The relation. So what is Bg then? Bg was d phase plus k. dv phase by dk is this. So dv phase by d lambda into minus 2 pi by lambda k square. 1 k cancels out. 2 pi by k is lambda. So v phase minus lambda dv phase by d lambda. This is the relation between group velocity and phase velocity. So it is very easy to derive. Many times that comes as a question. Many times people ask this as a long question. What do you mean by phase velocity and group velocity? Obtain the relation between them. This is very important question and is a question for mid-sem exam. So practice this. If you are facing any problem, let me know. Question goes like this. What do you mean by phase velocity and group velocity? Derive the expressions for phase velocity and group velocity and obtain the relation between them. Tomorrow, we shall see how, assuming the electron to be a wave packet or group of waves, the velocity paradox as well as delocalization problem was overcome. कैसे इलेक्ट्रॉन को एक वेव पैकेट समझ के डीलोकलाइजेशन प्रॉब्लम जो था कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी लोकेट हो सकता है या इलेक्ट्रॉन का फेज वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी सेम नहीं था, वेव पैकेट समझ के कैसे वो सेम हो गया, उसको हम कल लिखेंगे नेक्स्ट क्लास. बट यू गो थ्रू दिस वेरी केयरफुली. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? Any question? No, sir. No, sir. Okay. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye bye. Sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.